So hello all, this is me Ankit, and in this channel we will be discussing CAD preparation videos. So we will be posting videos regarding verbal ability and reading comprehension. We'll be posting videos on quants, formulas, concepts, tips and tricks and shortcuts. We'll also be discussing DILR concepts. So from today onwards, we will be posting short videos, like it will be a 3 to 4 minute videos. So let's start with a parajumble. So this is a moderate question, and to deal with how to deal with parajumble is, first you have to read the whole statements which are given one by one and just understand the gist of it. Okay, so we have to read the statements one by one, understand it, and we have to form pairs. Pairs in the sense is blocks. Okay, and we have to keep in mind the grammatical statements, which statements are linked by grammar. So if a person's name has been mentioned, so for that some pronoun has been used, so we can take the help of pronoun to form a pair. We can use the chronology. We can link two statements as per the sequence, like if someone is leaving from home, so he can go to some place. So first he will leave from home and then he will go to some other place. So likewise we have to form statements. Then likewise we have to form pairs. Uh, we can use like connections like in this question we'll see how we can other ways how we can form the pairs and on. So let's start with this question. So as I have mentioned, we'll read all the statements and we'll try to find the starter, which statement can be the starting one. Okay, so let's read it one by one. Somewhere in all this, it was thought there also resided a mysterious elan vital, the force that brought inanimate objects to life. So in this, we have two, three clues. First clue is this. Since this is used, we know that this is referring to something. Something has been discussed before. For that, this has been used here. Also, uh, it is mentioning about some uh, force which brought inanimate objects to life. So there have to be some story, some history before this, because it's also using a word also. So means something prior, something has been discussed before this statement. कुछ आया होगा पहले, इसके पहले this कहा है, इसमें also कहा है. हम जब also का यूज कब करते हैं? या तो ये हुआ होगा also I want this, मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, so we use also in that place. Okay, so this statement cannot be our opening statement. Okay, so let's read the second one. First statement telling कि ये सब के बीच में ऐसा सोचा गया था, it was thought कि यहाँ पे कोई ऐसा फोर्स है जो कि मुर्दे में जान ला सकता है. Okay, so next statement, let's see. Although chemistry had come a long way in the century that separated Newton and Boyle from Scheele and Priestley and Henry Cavendish, it still had a long way to go. So we can make the statement simpler by reading like this. Although chemistry had come a long way in the century that separated X and Y from Z and W and U, it still had a long way to go. So this statement seems like a independent one because it does not link to it doesn't seem that it is linking to some other statement, and you're also giving a feel that it is a starting point. It could be a starter, and it is mentioning about chemistry and some that it is also giving a hint that it is different from something, but it is also giving a hint. The ending idea is that still have a long way to go. So this could be a starter, and we'll keep it aside. Okay. So let's read the third one. No one knew where this ethereal essence lay, but two things seemed probable: that you could enliven it with a jolt of electricity, and that it existed in some substances but not others, which is why we ended up with two branches of chemistry: organic
for those substances that were thought to have it, and inorganic for those that did not. So in this statement, there is a very big clue. First is this ethereal essence. This ethereal essence is definitely talking about the mysterious elan vital, which was there in the statement 1. Because this force, this mysterious elan vital, which is mentioned in the statement 1, is definitely the ethereal essence. So 1 and 3 are connected in some way. We'll see later how they are. Also, in the first statement, it is mentioned that the force that brought inanimate objects to life. It is talking about, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि मुर्दे चीजों में ये जिंदा कर सकता है उसको. और थर्ड स्टेटमेंट में भी ये कह रहा है दैट आप इसको जिंदा कर सकते हैं, यू कैन एनलिवन इट. तो हम पहले किस चीज की बात करेंगे? हम पहले ये बात करेंगे कि किसी चीज को जिंदा किया जा सकता है, उसके बाद ही हम बात करेंगे ना दैट कैसे उसको जिंदा किया जा सकता है. तो पहले विल टॉक वन. वन में बात करेंगे कि ऐसी कोई फोर्स है जिससे हम मुर्दे चीजों को जिंदा कर सकते हैं. उसके बाद थर्ड में हम बात करेंगे दैट उसको इलेक्ट्रिसिटी का झटका देके उसको हम वी कैन एनलिव इन इट, उसको हम जिंदा कर सकते हैं. ओके, सो 1 and 3 forms a very nice pair. ओके, तो उसके आगे क्या कहता है? एंड दैट इट एग्जिस्टेड इन सम सब्सटेंस बट नॉट अदर्स. यहाँ पे आगे ये मेंशन कर रहा है एक नया आइडिया दैट ये कुछ चीज़ों में था और कुछ चीज़ों में नहीं था. ओके, तो और यही आगे जाके दो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में बनता है. पहला ऑर्गेनिक जिसमें ये चीज़ था, ये एसेंस था, ये मिस्टीरियस एलान विटाल था, और इनऑर्गेनिक जिसमें ये नहीं था. तो यहाँ से एक और हिंट मिलता है. इस स्टेटमेंट से हमको दो चीज़ें पता चलती है कि हमारा स्टार्टर क्या हो सकता है, केमिस्ट्री. सेकेंड वन इज आर स्टार्टर, क्योंकि इसमें बात कर रहा है कि केमिस्ट्री के ब्रांचेस बने. तो हम पहले ये बताएंगे कि केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करेंगे पहले. दैट विल इंट्रोड्यूस केमिस्ट्री फर्स्ट, देन विल टॉक अबाउट इट्स टाइप्स. फर्स्ट विल टेल दैट इंडिया क्या है, उसके बाद हम बताएंगे कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, या फिर इंडिया डेमोक्रेसी है या फिर क्या है, उसके टाइप्स में बाद में जाएंगे. फर्स्ट विल इंट्रोड्यूस केमिस्ट्री, देन विल टेल दैट हाउ inorganic and organic chemistry came into existence. The fourth statement is right up to the closing years. Right up to the closing years, organic and inorganic. Okay, so let's see. Right up to the closing years of the 18th century, scientists everywhere searched for and sometimes believed they had actually found things that just weren't there. अब इससे हमको क्या हिंट मिलता है? लाइक इन सेकेंड स्टेटमेंट हमने कहा कि केमिस्ट्री बहुत आगे आ चुका है, बट स्टिल इट हैव अ लॉन्ग वे टू गो. देन इसके बाद में जो आइडिया है, एंडिंग थॉट है, इसको आगे ले जाने का काम करता है फोर्थ स्टेटमेंट. यहाँ पे कहा गया कि साइंटिस्ट जो है हर जगह ढूंढा है एंड समटाइम्स बिलीव दैट दे हैड एक्चुअली फाउंड थिंग्स दैट जस्ट वरंट देयर. तो इसमें हमको एक हिंट मिल रहा है दैट कुछ चीजें जो मिसिंग थी केमिस्ट्री से, वो साइंटिस्ट ने 18th सेंचुरी में ढूंढी है जो कि नहीं था. इसके बाद ओके, सो 2 and 4 फॉर्म्स अ ग्रेट पेयर. सो 2 4, अब वहां पे कह रहा है कि दैट कुछ चीजें नहीं थी. नाउ फोर्थ के बाद में वन समझ में आता है कि समवेयर इन ऑल दिस, यहाँ पे जहाँ पे वो लोग ढूंढ रहे हैं वहीं पे कुछ चीजें था, एक फोर्स था, मिस्टीरियस एलान विटाल. तो 2 and 4 is a pair, 4 and 1 is a pair, and 1 and 3 is a pair. So we have three pairs. We have 2 and 4 is a as a pair. Okay, 2 and 4 as a pair. We have 4 and 1 as a pair. Okay, 4 and 1 as a pair, and we have 1 and 3 as a pair. So the answer for this will be 2 is our starter. Okay, then 4 is following the thought that scientists have searched something which is somewhere, exists somewhere, and 1 tells us that somewhere in the middle of all this there is a mysterious force जो कि मरी हुई चीज़ों को जिंदा कर सकता है. और फोर्थ 3 हमको बताता है कि विद अ जोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी कैन ब्रिंग इनएविटेबल ऑब्जेक्ट्स टू लाइफ. बट ये जो फोर्स है वो हर जगह नहीं है, जहाँ पे ये फोर्स एग्जिस्ट करता है वहीं पे हम वो काम कर सकते हैं. सो इस बेसिस पे केमिस्ट्री के दो पार्ट्स बन गए, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. सो इस बेसिस पे हमारा वी हैव लाइक इस तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए पैरा जंबल्स. सो जस्ट लेट मी नो हाउ यू डिड यू लाइक दिस वीडियो और नॉट. आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड कीप फॉलोइंग मी, कीप फॉलोइंग दिस चैनल टू learning and enjoying
learn while enjoying. So, tata, bye bye. See you tomorrow. Thank you.